आई नो रीडिंग इज हार्ड, बहुत लोग को रीडिंग करना पसंद भी नहीं है, बहुत लोग को रीडिंग करना चाहते हैं बट वो जो बुक्स पढ़ते हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आप बुक पढ़ना शुरू कर देते हो बट आफ्टर फ्यू पेजेस, आफ्टर फ्यू चैप्टर्स आपको लगता है कि अभी इंटरेस्ट है ही नहीं। देन हाउ टू गेट बैक टू द रीडिंग, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 9 steps or 9 simple techniques, or you can call it steps, whatever you want to call it, कि जिसकी वजह से you can get back into reading, जिसकी वजह से you can start reading again, and that will help you to start reading more and more books just like me, because I'm a kind of person who actively supports the reading community or reading culture, because that there are so many benefits of reading you will never realize abhi ke time pe, but when you go ahead in life then you will realize ki why reading is important and how that shaped your life. So before wasting any time, let's get into the video and let's see what are those 9 steps. The first question that you should ask is why do you want to do it? Why do you want to read the books? बहुत लोगों के पास इसका आंसर भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज दैट लुक्स रियली गुड ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरीज, या आपको किसी को दिखाना है कि यार मैं बुक्स पढ़ता हूँ इसलिए आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, देन दैट्स नॉट अ रियली गुड आइडिया और दैट्स नॉट अ रियली गुड थिंकिंग. थिंक अबाउट इट अ डिफरेंट वे कि नाउ इफ यू रीड समथिंग टुडे एंड शायद वो एक पैराग्राफ, एक लाइन, एक चैप्टर अगर आपकी वो लाइफ बदल दे तो, like that thing happened with me with so many books. Like when I finished reading the Midnight Library, amazing book, I will highly recommend it to read it. When I finished that book, there are so many things I realized, that how I want to live my life, how I want to spend my time, how I want to meet with friends, how I want to make my decision in my life. And बहुत सारी चीजें तभी मुझे पता चल रही कि when I get to know, or when I get to know the story. And that's the reason you have to find your why do you want to read it? It just because इंस्टा वर्दी दिखने के लिए, it just because लोगों को जताने के लिए कि यार मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ और साल में एक बुक पढ़ते हो, and if you call yourself a reader, then I don't think that's a good validation. Or if you're doing just for the validation कि लोग आपको बोले कि यार ये बुक पढ़ता है वगैरह वगैरह, then sorry bro, sorry girls, that is not something I'm going to promote here. That is something you can do it for your own validation, but figure out your why do you want to read it? It is because आपको एक बेटर पर्सन बनना है? इज इट बिकॉज आपको एक बेस्ट पर्सन बनना है? इज इट बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, यू वांट टू कल्टिवेट दैट हैबिट इन योर फैमिली, इन योर चिल्ड्रंस, इसमें से कोई भी रीजन हो, देन आई हैव अ फुल सपोर्ट. Second question, and the most important question that you should understand, is why you are bad at reading. अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, then mystery solved. You don't have to think about anything basically. Why you are bad at reading? It is because you get your phone always with you. Like आप हमेशा आपके फोन के नोटिफिकेशंस ऑन रखते हो, हमेशा 2 मिनट में आप अपना फोन चेक करते हो. Is it because रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है? Is it because आपके the chapter or the book is not related to your interest? Is it because किसी ने आपको ये बुक सजेस्ट की है इसलिए आप पढ़ रहे हो? But understand this, though humans or though people are different, they cannot have the same reading test. I mean, they can have the same reading test, but the way the same person sees the book, अगर एक इंसान किसी ए को अलग नजरिए से देख रहा है तो बी उसे अलग नजरिए से देखेगा. सो दैट्स द वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. अगर आप उसकी वजह से आप देख रहे हो कि यार इसने मुझे ये बुक सजेस्ट किया इसलिए मुझे पढ़नी है, या बिल गेट्स ने ये बुक्स पढ़ी है, या इलॉन मस्क ने ये बुक पढ़ी है इसलिए मुझे ये बुक पढ़नी है, then that is not going to help you. So that's the reason you have to figure out why you are bad at reading. It is most of the time, is it because of the phone, the biggest distraction in our life and biggest tool also, अगर हम उसे राइट तरीके से यूज करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन है. बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू द रीडिंग, नोटिफिकेशन आ जाती है, ये 10 मिनट बुक पढ़ने की होती है बट उसके बीच में 30 मिनट का हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट समथिंग वी वांट टू डू इट. सो फिगर आउट व्हाई यू आर बैड एट रीडिंग. ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, देन यू आर ऑलमोस्ट सॉर्टेड. नाउ इफ यू आर ऑलरेडी अ रीडर और आपको फिर से रीडिंग जोन में जाना है, आपको फिर से बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है, देन द बेस्ट आंसर इज टू रीड द बेस्ट बुक्स, और रीड द बुक्स दैट यू हैव एंजॉयड इन द पास्ट. So for me, there are few books like the Midnight Library, जैसा मैंने अभी बताया था. Second book is Harry Potter series, Lord of Rings series. Then there is book called The Almanac of Naval Ravikant. Then the third Doer, The Courage to be Disliked. So these are a kind of books that I reread every year. Even The Atomic Habit, Psychology of Money. So these are the books I reread every year. It is because the enjoyment part. It is because
when you read those chapters again with different life or different experience, then that makes sense in a different way. होप यू विल गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. सो बेसिकली मुझे कहना चाहता था कि अगर आप पैराग्राफ अभी पढ़ते हो तो कुछ टाइम में समझ नहीं आता, बट शायद एक्सपीरियंस के बाद अगर आप सेम पैराग्राफ पढ़ते हो तो शायद वो समझ में आ जाता है. सो दैट चेंजेस अ लॉट. सो री रीड द बेस्ट बुक्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट ट्रैकिंग यूर रीडिंग जर्नी. अगर आपके पास गुडरीड्स का अकाउंट नहीं है, देन गो ऑन द गुडरीड्स, ओपन योर अकाउंट. अगर गुडरीड्स अगर आपको यूज नहीं करना है, then in the your mobile try to open the notepad, try to open create doc file or excel sheet जहाँ पे you can record your reading progress. The best way I to suggest, try to keep the minimum 10 pages a day. That is something that goal you should keep. We will talk about that later. But start recording your reading progress. Like ये book पढ़ी, इस books में you can you have to describe this book. Let's say I'm talking about this book and I have to describe this book in only 5 words. तो वो 5 words क्या हो सकते हैं, और I have to describe this book in only 5 lines. तो 5 lines क्या हो सकती है. So these are a kind of a scene or these are the kind of a thing you can do and you can start tracking your reading journey. तो आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक कितनी बुक्स पढ़ी है. Like I have read more than 500 to 1000 books and I don't have a record of all the books because I never did it in the past when I was child, और जब मैं 11th standard में था, 12th standard में था, तब के टाइम में मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह कभी किया भी नहीं था. जब से आई स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग कि मैंने क्या क्या किया, कौन सी बुक्स पढ़ी, उसमें से मैंने क्या क्या सीखा. एंड देयर इज समथिंग स्पेशल गिफ्ट coming soon. For that you have to subscribe to the channel and join the newsletter if you want to be the first one to get that gift. So start recording your reading journey. Next step which you will find in each and every bookstagrammer or Twitter पे, read what you love. Even the Naval Ravikant says that read what you love rather than reading कि ये दुनिया क्या बोल रही है, ये कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं, बिल गेट्स कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं. Forgot about that. Read what you love. Like your interest is romance, then start reading romance books. If your interest is 50 Shades of Grey, then start reading 50 Shades of Grey. There is no harm in that. But you have to get into that reading progress because that is really important. Unless and until you get into that reading progress, you will never have a good start. So अगर आपको फिर से reading journey start करनी है, then you have to reread or you have to read whichever is your interest. Like for me, my interest is business, startup, then romance because I read a lot of romance books. Recently I finished a new book by the Durjodat, so review will be coming soon, so stay tuned for that. So the conclusion is you have to read what is your interest. The next strategy or the step is really important because यहाँ पे सब लोगों की गड़बड़ हो जाती है और यहाँ पे सब लोग काइंड ऑफ स्टेप बैक कर लेते हैं. डेडिकेटेड रीडिंग टाइम विच इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको घूमने जाना है, वीकेंड पे बाहर जाना है, तो आप उसके लिए डेडिकेटेड टाइम रखते हो कि यार मुझे 8 बजे पार्टी में जाना है तो 6 बजे या 7 बजे मैं रेडी रहूंगा ताकि मैं थोड़े टाइम पहले पहुंच जाऊं. या फ्रेंड को मिलना है तो आप थोड़े टाइम पे पहले ही जाके मिलोगे. या जो भी नेटफ्लिक्स सीरीज देखना है उसके लिए तो आप डेडिकेटेड टाइम नहीं, आप उसके लिए तो पूरा दिन देते हो, राइट. इफ देयर इज अ नेटफ्लिक्स सीरीज एनी विच इज यू स्टार्टेड एंड वो आपको एंजॉय लगी, फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, फर्स्ट सीजन, सेकेंड सीजन, थर्ड सीजन, एंड यू फिनिश whole series in 1 day, 2 days. And why don't you do that with the reading? Because you don't फर्स्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, सेकेंड आप उसके लिए डेडिकेटेड टाइम नहीं देते. सो ट्राई टू मेक डेली शेड्यूल, आपका जो भी शेड्यूल है, ट्राई टू ऐड द डेली रीडिंग टाइम. लेट्स से मॉर्निंग में 10 minutes आई विल रीड और इवनिंग में 10 minutes आई विल रीड. देन फॉरगॉट एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन दैट रीडिंग टाइम and create that reading point every day, either 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, depends on whatever the timing you prefer. Try to create that reading time, otherwise it will be really hard to get into the reading. So step is start with less than 100 pages book. To read 100 pages, I don't think that's a bad deal, right? I mean, you can read 100 pages. अगर आप 100 pages भी नहीं पढ़ सकते हो, then I feel really bad for you. I mean, no one is gonna help you. Not even 100 pages, like I said, less than 100 pages. So I have made a dedicated video on the books जो कि less than 100 pages है. Just go on that video and buy all the books. You will have all the books which are less than 100 pages, which is starting from literally 49 pages to 50 pages, 60, 65, 70, 82, 87, 94, 99 pages.
and which you can finish that in literally in one day. You don't have to spend a lot of time. Even if you read 10 pages a day, still you will finish that book in 4 days. I'm not even saying कि you have to go and उसके लिए specific चीजें करनी पड़ेगी. You can do it in really low amount of time. So start with less than 100 pages book. The next step, which is the biggest distraction, which I'm gonna talk about, is DND mobile. Like do not disturb. मोबाइल में एक फंक्शन दिया होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब का, बट वो कब यूज करना है लोगों को पता ही नहीं. दे यूज इट व्हेन दे आर इनटू द पब, दे यूज इट व्हेन दे आर इनटू समवेयर एल्स, बट व्हाई डोंट यू यूज दैट फंक्शन व्हेन यू आर रीडिंग द बुक. डीएनडी फंक्शंस लिटरली हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज उस टाइम पे नोटिफिकेशंस नहीं आते, कॉल्स नहीं आते, मैसेजेस चेक करना नहीं पड़ता, और आपका जो रीडिंग टाइम है उसी टाइम पे आपको डीएनडी मोड भी आप एक्टिवेट करके रख सकते हो. सो यू कैन लिटरली फोकस ऑन ओनली वन थिंग विच इज रीडिंग बुक. And as you get into the reading, then obviously life becomes easy to read more and more books. So focus on the D&D mode and focus on the making your time, specific time for the reading. Last but not the least is set goals. गोल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. जब ऐसे गोल आता है लाइफ में तो चैलेंजेस आ जाते हैं, और चैलेंजेस आता है तो ईगो पे चीजें आ जाती है, और जब चीजें ईगो पे आ जाती है देन यू आर गोना डेफिनेटली डू इट. लेट्स से कि अगर मैं आपको बोल दूं कि यार क्या इंसान है 10 पेजेस भी एक दिन में नहीं पढ़ सकता, तो फिर लाइफ में क्या करेगा. अगर मैं ऐसे बोलूँ कि तेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का, देन ऑब्वियसली यू विल टेक दैट थिंग्स एवरीथिंग इन पर्सनली, कि यार ये मुझे बोल रहा है, ये मुझे ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है. देन गोल इज अ काइंड ऑफ एक्ट लाइक दैट. सो ट्राई टू सेट अ गोल. Let's say set a goal for 5 pages a day, then go 6 pages a day, 7 pages a day, 8 pages a day, 10 pages a day. So that is something that you should start doing every day. So set a goal and create a Excel sheet or create a calendar. Calendar में लिख देना हर डेट के यहाँ पे 10 pages. और जिस दिन आपके 10 pages खत्म हो जाए then tick mark and never miss twice day. I mean 2 दिन कभी भी मिस नहीं करना, वरना फिर से आप आउट ऑफ कहाँ पे तो रीडिंग जोन के बाहर चले जाओगे. एंड आई डोंट वांट दैट, बिकॉज आई एम हियर टू प्रमोट रीडिंग कल्चर, एंड रीडिंग कल्चर प्रमोट करना इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. So start making your goals. Let me know what is your goal. If you are into the reading or if you are getting back to reading again, let me know your goal into the comment section. And let's see if you are, I'm going to ask you, if you put the comment 10 pages a day, I will ask you every day whether you have read 10 pages or not. So I'm gonna do that if you put the comment. So make sure you do that and set a goal to start at least minimum 5 pages, 10 pages, 20 pages, whatever is your preference. जितना आपके पास टाइम है. I hopefully इंस्टाग्राम से कम टाइम मिलेगा तो आपके पास शायद ज्यादा टाइम हो सकता है. सो मेक श्योर यू फोकस ऑन दैट. सो दीज आर द 9 steps दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो टू गेट बैक इनटू द रीडिंग जोन, गेट बैक इनटू द रीडिंग बुक्स, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. स्टार्ट डूइंग दैट. लेट मी नो हाउ मेनी यू ऑलरेडी डू इट एंड हाउ मेनी यू हैव वांट टू गेट इनटू दिस स्टेप्स एंड स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी अगेन. So that's more about this video. If you want this tip in detailed video and the writing format, then make sure you join the newsletter, jahan pe I'm going to explain everything in the detail. The link is in the description. And that's all for the today's video. If you are looking for the books less than 100 pages, check out this video where I shared the books less than 100 pages. And if you are looking for the books less than 100 rupees, check out this video where I shared the books less than 100 rupees. That's all for today. See you in the next one. Bye bye. Take care.